Assalamu alaikum. Welcome to another episode of The Catalyst. And we are very excited today, bringing a very special topic which is very close to our hearts. And thank you so much, Sajeer. Welcome to the show, The Catalyst. Thank you. Thank you so much for joining us. We have with us today a brilliantly talented journalist, जो कि मैंगो बाज के लिए लिखती हैं एंड पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे भी आ चुकी हैं, अपनी ज़बरदस्त एक्सपर्टीज और राय हमें देती रहती हैं. और आज हम बहुत एक्साइटेड हैं सजीर आपके साथ ये डिस्कशन करने में. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Thank you so much for having me. I'm very excited about this topic. क्योंकि हुआ यूं कि सजीर जब मैंने आपके इंस्टाग्राम पे ये टॉपिक देखा ना, इट जस्ट जो एक यूरेका लाइट बल्ब आपके दिमाग में ऑन होता है ना, वो हुआ. मैंने कहा ओके, दिस इज द टॉपिक दैट आई हैव बीन वांटिंग टू टॉक अबाउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और अब मौका मिल रहा है तो लेट्स जस्ट गेट इन टच विथ यू और इसके ऊपर बात करते हैं. तो शुरुआत मैं करना चाहूंगी इस बात से कि आप मुझे बताएं एज अ स्टूडेंट आपके साथ क्या क्या हुआ, फिर मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ एज अ स्टूडेंट क्या क्या हुआ, फिर हम आगे चलते हैं इस डिस्कशन को लेके. बिल्कुल बिल्कुल. So as a student बहुत सारी चीजें हुई है जिनके बारे में I've been talking about on Instagram as well, but there were a few things that left, I wouldn't say long lasting impact or trauma, but few things that could have been avoided. I feel हमारे education system is so toxic at times that we don't ever think about these things till we move forward. So for instance, the most prominent thing that I can think of was in just blatant slut shaming all the time. Like आपकी जो body है, जो आपकी feminine body है, even if you're in an all girls school or otherwise, that is seen as such a liability. And it is shamed at every single point in time. So for instance, when I was in school, I'm not going to take the name because I don't want anybody to like send legal notices, but when I was in school, बहुत दफा ऐसा होता था जैसे कि हमारी even the undergarments that we were shamed about that, right? तो जैसे teachers आके कहती थी कि who are you trying to attract by wearing this? I'm not trying to attract anyone. I'm just trying to get through the day. I'm trying to deal with the fact that my body is changing. I don't know how to go about it. I'm doing the best I can. But here, they made it a point to shame us about that. Again, like when you are at that stage, you're also sort of beginning to get your period. And that's something. The best part was हमें जिस तरह सिखाया था ना periods के बारे में, मैं आपको ये बताती हूँ. Class 5, I remember this so distinctly. We were in class 5, which is around the age, I think we're all 10 at that time. And हम जो boys थे हमारे school में, it's co-ed till a certain point in time. Boys को बोला games period है, आप लोग जाओ. लड़कियों को सबको एक क्लास में बिठाया and they vaguely explained कि ये होता है, ये होगा, and nobody understood a thing. And I remember asking questions, and the teacher, the person who was explaining it was trying, like sort of struggling. तो उसी वक्त एक बात तो very clear हो गई थी कि vocabulary नहीं है हमें समझाने की about all of these things, which doesn't make sense because it's something that all of us go through. When I eventually did get my period, I remember it was a disaster. I didn't know what to do. I didn't know how to handle it. I genuinely thought, okay, there's something wrong with me. And I remember I texted my friend who was a little older, who was on her way to somewhere else. And I was like, help me, what do I do? Like, I don't understand anything. And she helped me, So इस तरह की चीजें हुई थी. There were also, I know, this is something that I always hesitate when I talk about it because, again, of the situation. But stuff like religious shaming, like which is weird because it was a convent school, but religious shaming jo aapki karti thi teachers. For instance, my mother is Christian. One of the Islamia teachers straight up used to say that you're going to hell and your mom's going to hell with you. And I really thought that, okay, I mean, it's a weird thing to say to an 8-year-old, a 9-year-old, and I've never really fully understood why that happened. Or so yeah, like इस तरह की चीजें होती रहती थी, and it made for a very toxic environment growing up. And
Yeah, I would love to hear about your experiences. Tell me. Well, my experience was कि मैं जिस स्कूल में थी वो अब चूंकि बंद हो चुका है तो मैं अब उसकी खुल के बुराइयां कर सकती हूँ, ठीक है. लेकिन the thing was कि I went to SNA Foundation High School, which was a private school in Lahore, all girls, very strict disciplinarian and all that. Even though the curriculum was very good, I'm very happy that I studied in a very good school. लेकिन डिसिप्लिन के नाम पे जो बच्चों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वो गलत है थोड़ा बहुत. और स्टार्ट में इसी बात से करूंगी जो आपने पीरियड्स के बारे में बात किया, लेकिन हमारे स्कूल के उस जमाने में खैर आप हमसे बहुत छोटी हो, हमारे जमाने में तो बिल्कुल भी सेक्स एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट. तो कुछ पता नहीं था. एंड आई रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली दैट व्हेन आई वेंट थ्रू दैट horrible first floor, I had no idea. I thought maybe I'm dying, maybe I have some disease, you know. And they're just, you know, they're the ayahs, they're trying to figure out how to put things together for you, and you're feeling ashamed, and because your mother is not there to help you, and it's a very, you know, uncomfortable, confusing stage to begin with. और अगर आपको कोई साथ help भी नहीं कर रहा, navigate भी नहीं कर रहा, आप और ज़्यादा confused हो रहे. So the only guidance I could get was from my parents when I got back home. They were the ones who told me, explained to me. बल्कि मैंने तो एक बहुत ही brilliant हरकत की थी. मुझे किसी ने कह दिया कि भाई ये impure blood होता है, तो मैं जाके साफी ले आई. तो मैंने कहा अगर मैं ब्लड को प्योर कर दूंगी तो फिर तो निकलेगा ही नहीं. I totally messed up my system, I guess, at that time, because Safi made me sick. And then it was, bas, you know, that's how you just गिरते पड़ते आप कुछ ना कुछ सीख जाते हैं. And that is true. और जब आपने भी ये बात की ना कि आपकी ब्रा के बारे में अगर कोई टीचर कह रही है कि तुमने किसको अट्रैक्ट करना है, at that young age of even 13, 14, when the initial understanding of attraction towards somebody else just begins, you don't even, you're not even fully developed in the sense where you would go to increased heightened levels of intimacy even. आपकी इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, आपको इतनी पता ही नहीं है. अभी तो आप शुरू शुरू की एक अट्रैक्शन को गेज कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड समबडी थ्रोज समथिंग लाइक दिस इन योर फेस, मेकिंग यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ, मेकिंग यू फील डाउट, एंड यू नो इन द सेंस कि अगर मैं ऐसा फील करता हूँ तो मैं कुछ गलत फील कर रहा हूँ, हालांकि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, यू नो. तो ये लाइक आप ऑफ कोर्स बच्चे को समझाएंगे, बताएंगे सही तरीके से ताकि वो इन फीलिंग्स को नेविगेट कर सके, समझ सके. एंड लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता था. और आप बिल्कुल सही, हमारे स्कूल में थ्रेडिंग पे लड़कियों को चपेड़े पड़ी हुई कि हाउ डेयर यू डू थ्रेडिंग ऑन द स्कूल कैंपस, राइट. एंड देन एक और बड़ा टेरिफाइंग एक्सपीरियंस जो था हमारे स्कूल में वो था चीटिंग का. चीटिंग वाज लाइक द बिगेस्ट कार्डिनल सिन दैट यू कैन एवर डू, राइट. एंड इफ यू हैव डन दैट, तो यू वुड हैव टू वेयर अ ब्लैक बैंड. एक सैश होता था जिस तरह बीकन हाउस के उसमें नहीं होता यूनिफॉर्म में एक सैश लड़कियां पहनती हैं लाइक दिस. वी यूज्ड टू वेयर अ सैश लाइक दिस, यू नो, दुपट्टे की तरह. तो ब्लैक कलर का वो आपको एक सैश पहनाया जाएगा, और जितनी लड़कियों ने चीटिंग की है उनको सबको एक एक क्लासरूम में ले जाके दिखाया जाएगा कि लड़कियों ने चीटिंग की है, इनका नाम लिया जाएगा. एंड द गर्ल्स वुड क्राई लाइक भेड़ बकरियों की तरह. आप जैसे उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम्स में लेके जा रहे हैं, एंड दे आर क्राइंग ओवर इट. एज अ यंग चाइल्ड आई वाज टेरिफाइड. आई वाज टेरिफाइड कि कभी मुझे इस तरह की चीज ना. और मैं चीटिंग से डरती थी. मैं बहुत, मुझे चीटिंग से डर लगता था कि मैं अगर पकड़ी गई तो अव्वल तो मुझे ठीक से करनी नहीं आएगी, और मैं डेफिनेटली पकड़ी जाऊंगी, और अगर मैं पकड़ी गई तो मेरे साथ ये होगा. आई वाज टेरिफाइड. एंड देन आई रिमेम्बर वंस आई वाज रॉन्गली accused of cheating in school, and the teacher put the entire blame on me, and I was crying as a young student in the senior teacher's office, and coincidentally my mother was there. वो फीस देने आई थी, तो उन्होंने देखा मैं रो रही हूँ, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. तो उस चक्कर में ना पता चला कि जी आपकी बेटी जो है वो घर पे जाके टेस्ट पे करके खुद लेकर आई है, और वो कह रही है टीचर कि तुमने मुझे 0 दे दिया है, जबकि मैंने तो सही किया काम, यू नो. एंड देन माय प्रिंसिपल, जस्ट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, if my mother hadn't arrived, they said without any further investigation, because teacher is always right, the student is always wrong. ये भी एक mentality थी, ठीक है, कि उसकी आपने बात सुननी भी नहीं है. They said bring the black sash, she's going to wear it. And I was just terrified and crying. And then my principal came to my rescue, and she investigated the whole thing. In the end, I got a clean sheet, my marks were restored, I was sent back to my classroom. तो ये और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं क्लास 7th में थी या 6th में थी, तो मेरी मैथ की टीचर ने मेरा बाजू बहुत जोर से पकड़ के ना
कोने में खड़ा किया था because I made some mistake. And then once I remember, I was an average student. सजीर, मैं कोई टॉपर नहीं थी क्लास की. मुझे टाइम लगता था पढ़ने में. मैं I was just slowly getting there. अच्छा, और it was a hard curriculum. We are studying 20 subjects, plus extracurricular activities. मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता था एक आम बच्चे की निस्बत, ठीक है. तो मुझे याद है कि एक जनरल नॉलेज का क्विज था और मैंने इंस्ट्रक्शंस मुझे समझ में नहीं आई. तो जब मैं पेपर लेके गई तो द टीचर स्टार्टेड शाउटिंग एट मी कि ये क्या किया है. तो आई गॉट इवन मोर कंफ्यूज, मुझसे और भी कुछ ना हुआ. तो जब बच्चे को डांटा जाता है, उसको और ज्यादा सब सारी क्लास के सामने डांट पिटती है, तो वो अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश भी कर रहा होता है तो वो भी उसको भूल जाता है, याद नहीं रहता कैसे करना है. तो दिस इज द कल्चर दैट वी लिव विद. लेकिन it's very sad. I think we went through hell. Yeah, I But think thank God we survived out of it at some point in our lives. Like, and it's awful. It's really, really awful. I do think that जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है, जिस तरह से हमें educate किया जाता है, it's very fear based. There's no love involved. There's no empathy involved. It's so colonial. It's so fear based. There's such a clear cut power dynamic जो आपको obviously in retrospect दिखता है. उस वक्त तो आप बच्चे होते हो, but even like the instance with like saying कि आप किसको attract करना चाह रहे हो, how I want to ask teachers, how dare you take agency over my body and sexualize it before I have even begun to realize what my body is? How dare you associate shame with my body before I even understand what shame is, for that matter? Like, again, like, everything has to stem from fear, like the fear to perform, the fear to do better, the pressure, the fear to not be embarrassed in front of everybody. Like, you had this black sash, we used to have this thing जहाँ पे एक chart होता था जहाँ पे सबके नाम होते थे, and उनके आगे अगर if you did a good thing you would get a gold star, but if you did a bad thing you would get a black star. And like, it used to be up on display, for everybody to see. Earlier classes में आपने कुछ बुरा किया तो था आपको हाथ पे black star. Like, the association of these tiny symbols and what they did to the student in question, having to carry that black star around all day, having to see every time you look at the chart, you see your name and there's a black star in front of it. All of these ways in which the education system and those who carry it forward have really blown our self-esteem to bits. Who I really do wonder who takes accountability for that, because clearly अब तक तो कुछ change तो हुआ नहीं है. The same people, the same teachers, the same method of teaching is still present in schools. There's far more toxic stuff that happened to me in college as opposed to even school. And in college, you're what, like 16, 17, 18, you're nearly an adult, and you're still treated, not only are you treated like a child, but you're also expected to act like an adult, but you're also not given the responsibility of an adult. Nobody thinks you can make decisions like an adult, so you're still sort of held responsible for different things in different ways. Like, I think recently my Instagram पे बताई थी about this incident that happened where the principal of my college called me one day, and there was some confession page. So about confession pages होते थे, people used to post a lot of weird stuff on them. But she essentially called me. She had called me for something else as well, and she said she said to me, it's women like you, it's girls like you who ask for it when guys rape them or sexually assault them. And she said this to me, and I will never forget it, because I still remember clear as day मैंने क्या पहना हुआ था, मेरा कौन सा स्कूल का पीरियड था. I still remember it was bio class. What experiment I was doing, what time it was, मैं कौन सी lab में थी, मुझे कहाँ से बुलाया था. And the thing is कि it's also just, it doesn't stop there, right? It's when these conversations get out, and they, as they often do, because again, like, regardless of where you study, gossip तो हर जगह होती है, rumors हर जगह फैलते हैं. When those things spread and people perceive you in a certain way because your teacher or the person responsible for educating you decided to create an image of you that may or may not be true. And again, like, I just want to ask, who takes accountability for this?
who takes accountability for all the damage that is caused to students while we're being educated? Because that's supposed to be a safe space. Yet it is not. It is perhaps one of the most toxic spaces that we can exist in. Of course, there's a lot of good that goes into it. ठीक है, मुझे सिखा दिया, पढ़ना लिखना सिखा दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका, but at what cost? Right. नहीं, this is very disturbing क्योंकि उस जमाने में जब आप छोटे होते हैं, you know, when you're growing and you're navigating, even as a 17, 18-year-old also, जब आप कह रही हैं कि you're half adult and half child, you're still navigating through emotional intelligence, right? तो उस वक्त अगर आपको इस तरह से ट्रीट किया जाता है तो आप उस वक्त बहुत सी चीज़ों के मामले में यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर इमेज, योर रेपुटेशन. याद है आपको उस जमाने में रेपुटेशन का वर्ड कितना ज़्यादा डेंजरस होता है कि किसी की रेपुटेशन ना खराब हो जाए, मेरी रेपुटेशन ना खराब हो जाए. तो ये तो फिर बाद में जब हम जरा when we get into practical life and we learn so many other things, then we realize that hell with reputation, I don't need this, you know, I can do better than this, I'm much better than this, right? And but at a young age, yes, when those I that those value system is tarnished, it creates a ripple effect in a child's life. Definitely, I agree. तो ये बताएं मुझे कि आजकल क्या चल रहा है. ये तो हम अपने स्कूल सिस्टम की बात करें, मेरे हिसाब से तो इट्स स्टोन एज, हम बहुत पुराने पीछे चले गए. यू नो, आई वाज इन एसएनआ लॉन्ग टाइम अगो and it was I graduated from the school in 1992. तो आज 2002 में क्या हो रहा है, सॉरी 2022 में क्या हो रहा है, सॉरी 2002 में बोल गई. आजकल स्कूल्स में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आज वो ज्यादा सेफ हैं आपके ख्याल में कि और क्या फिजिकल अब्यूज ज्यादा है कि इमोशनल अब्यूज ज्यादा है? व्हाट्स द सिनेरियो राइट नाउ? So I will have to preface this by saying that again, जिस तरह की schooling मेरी हुई है, but I feel like जिस तरह की schooling हमारी हुई है, in fact, has been far more privileged than we come from a particular segment of society that and there's no pride associated with this. By the way, I'm just saying कि एक fact है, मुझे अपनी privilege acknowledge करके बताना पड़ेगा. तो but I will say that I was a student last, I suppose, I graduated college in 2014 and I graduated from my school in 2012. It's been a while, it's been nearly 10 and 8 years. So उस वक्त तो ये सब चीजें हो रही थी, but I do know that my sister was in school and I don't think things got any less toxic, to be very honest. If anything, I think things have gotten worse. I don't know about physical abuse. I do know that even during my time in school, there was physical abuse, which was very surprising because it was considered to be one of those places where physical abuse did not take place. Yet physical abuse did take place in some capacity. However, my aunt is a teacher at another school, and I know their physical abuse hota hai. I've been there many times. I've been to the school. I've tried to have these conversations with the teachers as well. But they say बच्चे ऐसे ही सीखते हैं. नहीं, बच्चे ऐसे नहीं सीखते. आप बच्चों को अगर ट्रीट कराओगे, अगर आपको बच्चे हैंडल करने नहीं आते, अगर आपको बच्चों से बात करना नहीं आता, तो आप बोलो कि आपको बच्चों से बात करना नहीं आता. Say that you are unfit for the job. Of course, I cannot sit here and pretend like leading a class of 20, 40 rowdy kids is easy. It's not, but there has to be another way to talk to these children. As far as the kind of schooling I come from is concerned, I do think that the toxic standards have not changed. Even from my sister's time, I know that वही rumors, वही slut shaming behavior, वही like, oh ये लड़की तो लड़के से बात करती है तो ये तो ऐसी होगी, and oh like I also feel like in general the because it's the lines between extra help and education have blurred so much that even the quality of education I feel is a little like questionable at this point. I'm not entirely sure, but I do feel that is the case. Because even when I was in, I'll give you an example of this. When I was studying in school, मुझे maths नहीं आती थी, मुझे अभी भी maths नहीं आती. I have never understood maths. I will not pretend like I like it. I hate maths from the bottom of my heart. But here's the thing. I had to give my O-level exam
एंड अब आप सोचें कि मैं क्लास 11 में हूँ, 11 साल मुझे मैथ्स कुछ समझ नहीं आई है, लेकिन मैंने अपने एग्जाम से 3 महीने पहले ट्यूशन लिया था, ठीक है। दैट ट्यूशन टीचर वाज सो नाइस, सो काइंड, सो encouraging, so cool to hang out with. Like it felt like doing maths with a buddy. I got an A star, which is insane. I had a D. I had a D till my mocks, and I got an A star in maths. I had to my teacher didn't believe. My tuition teacher didn't believe me. He's like, "Are you sure?" And I was like, "Yeah." Like you know. So I mean, it really does say a lot about how much effort the child is also going to put in if you make the effort as well, right? And I teach now. I teach a few kids like घर पे tuition के लिए. Of course, it's not the same thing, but there's so much breakthrough. There's so much progress that I've been able to make with these kids on a one-on-one basis. When I take interest in their lives, when I talk to them like a friend, when I pretend to share their interests, or tell them that I don't share their interests and have a conversation about it. So if you see kids as human beings and not like burdens that you have to teach for an hour and then go to your staff room and have your chat and gossip about those very kids, then yeah, like maybe you might be able to make some progress. राइट। नहीं, और एक और बात आपसे मैं उस दिन डिस्कस करी थी अभी पॉडकास्ट में हमारे जाने से पहले, आपसे जब बात हुई थी तो आपने एक बड़ी अच्छी बात मेंशन की थी अबाउट जो फेवरेटिज्म की आप बात कर रही थी, कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो जरा अच्छे होते हैं, लाइक फाइक होते हैं, उनको टीचर्स किस तरह से फेवर करते हैं और फिर बाकी उनकी मिसालें दी जाती हैं उसकी तरह का बनो। एंड आई थिंक शायद ये हमारी कुछ ब्रीफली आई थिंक वी टच्ड अपॉन दिस टॉपिक आल्सो। तो वो एक चीज, और फिर उसके साथ साथ एक और चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं आई डोंट नो आजकल के जमाने में होता है कि नहीं होता है, वो जो हमारी मार्कशीट लग जाती है बोर्ड्स के ऊपर कि जी रिजल्ट आ गया, मैट्रिक का रिजल्ट लग गया, बोर्ड का रिजल्ट लग गया, ओ लेवल्स का रिजल्ट लग गया। क्या डज दिस थिंग स्टिल हैपन? अभी भी ऐसे होता है कि नहीं होता है? लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन? तो आपको क्या लगता है? आई नो कि क्योंकि ऐसे होना तो नहीं चाहिए, है ना? होना तो नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक बिकॉज ये मेरे साथ ये हुआ था मेड स्कूल में मेरे साथ, जहाँ पे सारे मार्क्स लगा देते थे वो लोग। बट आई डोंट थिंक दिस हैपेंड टू मी अर्लियर ऑन इन लाइफ। वो एक डिफरेंट तरह की टॉक्सिसिटी है ना वहाँ पे। जब आपको आपकी रिपोर्ट कार्ड आती है तो हर किसी को पता करना है कि ओ आपके बच्चे का क्या है, गोल्ड स्टार आया है कि सिल्वर स्टार आया है कि नहीं है, कोई स्टार ही नहीं आया, और स्टार कैसे नहीं आया, 70% छी, लाइक 90% अमेजिंग। तो वो तो अलग टाइप की टॉक्सिसिटी है ना, वेयर अम्मी अब्बू सबके बैठ के आपकी रिपोर्ट कार्ड्स कंपेयर करेंगे। और अगर आपकी फैमिली मेंबर कोई आपके साथ पढ़ रहा हो तो आप मतलब खत्म, उसका 90 कैसे आया, तुम्हारा 88 कैसे आया, वो तो अलग टाइप की टॉक्सिसिटी है। पर ये जो है दिस आइडिया ऑफ showcasing your mark sheet for everybody to see, I think that's completely I don't see the point. Why एक तो मुझे ये चीज कभी भी नहीं समझ आती, पता है, शेम आप बच्चों को सिखाते हो, ashamed भी आपने बच्चों को करना है। तो like pick a lane, you know, pick a lane. You can't tell kids that don't be a cause of shame while then creating those factors that create that sense of shame in their mind while also then shaming those very children. Pick a lane, you know, like there are so many ways that you can shame children. Don't put marks up यार, किसको फायदा हो रहा है? आप ईमेल कर दो, डिजिटल हो गई है दुनिया, ईमेल कर दो यार, कितना टाइम लग जाएगा आपको? I don't get it. हाँ, नहीं, बल्कि मुझे इस तरह से याद है, बल्कि जो आपका एक बहुत फेमस स्कूल है मॉल रोड के ऊपर, जहाँ बच्चे एडमिशन के लिए माएँ सर पिटने को, रोने पिटने को आ जाती हैं कि बस यहाँ किसी तरह से हमारी एडमिशन हो जाए। लाहौर के मॉल रोड पे हमारा बेहतरीन स्कूल जो है, माय ब्रदर स्टडीड फ्रॉम एचिसन, मैं उसी की बात कर रही हूँ। और मुझे याद है कि उस जमाने में केनिंग होती थी, आई रिमेम्बर, छोटे बच्चों के साथ होती थी। एंड अभी कल yesterday I was talking to another friend of mine who's from HSN also, and I asked him कि भाई क्या होता था तुम लोगों के वक्त में, क्या हुआ, because I think he was a couple of years junior to me or maybe some, तो मैंने I just wanted to get a rough idea. He said कि my Islamiyat teacher slapped me across my face when I was in 11th grade. Imagine the kind of humiliation and trauma a student can go through when he's slapped like that, you know. तो इस तरह कहते नहीं वो होता था, लेकिन क्या इससे एक अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन टार्निश हुई है? नहीं हुई है।
parents are still wanting to send their children over there. They don't care कि अब मुझे नहीं पता कि अब आज की तारीख में हो रहा है वहां पे कि नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम आज से 15 साल 20 साल पहले पुरानी बात कर रहे हैं या 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो होता तब भी था, बट पेरेंट्स वांटेड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू दैट स्कूल। तो मुझे लगता है उस जमाने में शायद पेरेंट्स में भी शायद वो सेंस नहीं थी कि या वो अवेयरनेस नहीं थी कि भाई अगर हमारे बच्चे को मार पड़ सकती है तो हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को भेजें कि ना भेजें, या फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि जी एजुकेशन इन इटसेल्फ इज सच ए ह्यूज लग्जरी इन आवर कंट्री कि यू आर विलिंग टू पे एनी प्राइस फॉर इट। क्योंकि लग्जरी एक, क्योंकि अगर अच्छी एजुकेशन, एक बड़ा रोबस्ट करिकुलम, इफ इट कम्स विद अ प्राइस, इफ इट कभी कभार उसमें ओकेजनल कोई मार पड़ सकती है तो ठीक है, दैट्स फाइन, बिकॉज इट्स अ गुड इंस्टीट्यूशन, इट हैज अ गुड टैग, स्ट्रेट doorway to another good college, and your career, your life is set and all that. I would actually challenge the parents to answer this. What is a good institution? What is a good education system? Clearly, let's really holistically look at it, right? एक तो हमारा जो perception है when it comes to education is so classist, where O levels, oh wow, British exams दे रहे हैं, गोरों को exam paper जाएंगे, गोरा हमारे बच्चे का paper check करेगा, but metric, ये metric क्या होता है, inter क्या होता है, who are you to decide? I really want to ask, आपने look at the state of the country right now. Look at the educated elite. What have they achieved? Have they in any way made the country better? Have they in any way utilized their education to cause positive change? It is in fact that very fragment of society that is the most backward, the most conservative, the most toxic. So let me ask the parents this: what is a good education system for you? What is a good education system? जिसका नाम तो मतलब आपको पढ़ाना है ना, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन आप look at what that's doing to your child when you then complain 10 years down the line, 15 years down the line कि मेरा बच्चा मुझसे सही से बात नहीं करता, मेरा बच्चा पहले तो बहुत हंसता था अब चुप हो गया, मेरे बच्चे को ये इशू हो गया, वो इशू हो गया। That you did that by deciding that you want to send your kid to a particular place and not paying heed to what the child is saying to you. But it's me एक हमारा perception है कि बच्चे, if it's like the teacher versus the student, the teacher is to be believed because the teacher is the adult. Why? The kid is not lying. The kid may be lying, but if the kid has an issue, if the kid keeps saying कि मुझे ये इस teacher से नहीं पढ़ना या मुझे नहीं समझ आ रही, why not pay attention to the kid for once? Maybe the kid has some. There's so much that goes on in a school. There's so much that goes on in that child's mind as well. Like, why are we not paying attention to that aspect of things? ये जो एक perception है ना कि जो 5 schools हैं पाकिस्तान के जो कि ओहो वो इतने अच्छे हैं, what have those schools done in the long run? Like, I mean, I think that we need to sort of decolonize the way we see education. We need to remove the classism that is very evidently present in. मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम जब मेडिसिन कर रहे थे ना, हमें मेडिसिन का जो एग्जाम उसमें आपको ओ लेवल का तो सिलेबस करना होता है, उसके साथ मैट्रिक का करना होता है। ओ लेवल का सिलेबस, सॉरी ए लेवल का सिलेबस हल्का एज कंपेयर टू द मैट्रिक सिलेबस। आई रेड द मैट्रिक बुक्स एंड आई वाज लाइक ये बच्चे कैसे कर लेते हैं, और वो करते हैं, तो कहाँ से ओ लेवल सिस्टम बेहतर हुआ? I'm not saying that I agree with the quality of the textbooks and whatnot, because they did have to be updated, but the kind of content that was there, हम तो कुछ भी नहीं करते फिर, लेकिन आप बोलेंगे कि A levels are better than inter. I don't agree with that. So like this idea of like putting Cambridge and all of these other boards on a pedestal and like not focusing enough on our own education system, because if we don't focus on it, we cannot see what there is to improve, what potential exists, right? We need to sort of start doing that first. ठीक है, very good. You want to send your kid to an O-level school, go for it. But then listen to your child. Listen, keep your options open. Have like a holistic idea of what is happening everywhere. Because वो जो एक दुनिया है ना, that's not the only world that your child is going to exist in. When that child leaves that bubble and enters the real world, that child is going to get the shock of a lifetime. Because guess what? वो जो protected, safe environment relatively, even though it is not,
वो जो environment है, that is not the only environment for which in which the kid is going to exist when they become an adult. राइट बल्कि मैं तो इस बात में ये कहूंगी कि हमें से जो बेचारे बहुत ब्रूटली बैश्ड हैं स्कूल के जमाने में या कॉलेज के जमाने में, तो आई थिंक इफ सम ऑफ अस आर एबल टू absorb that trauma and coming out of it in a very strong manner, तो फिर आई थिंक जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो शायद आपको जब प्रैक्टिकल लाइफ जूते मारती है तो इतने जोर से नहीं लगते, क्योंकि आपने पीछे से काफी जूते खाए होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक शायद मे भी आपकी कोई प्रेप हो जाती है इफ यू वर टू लुक एट अ सिल्वर लाइनिंग दैट माइट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन आपने ये बात बिल्कुल सही की है कि आई आई एग्री के एजुकेशन के हवाले से आपको हर चीज देखने की जरूरत है, हर चीज को एक डब्बे में डाल के बंद करना, एक सिंगल वन ट्रैक माइंड के साथ चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात है कि सॉरी आई लॉस्ट माय चेन ऑफ थॉट फॉर अ सेकंड। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब आप बात कर रही थी कि व्हाई पेरेंट्स डू समथिंग लाइक दिस, जब वो जानते हैं कि अब्यूज है स्कूल में तो क्यों भेज रहे हैं उन्हीं गिने चुने 5 स्कूलों में। द प्रॉब्लम विद आवर कंट्री इज के द एजुकेशन इटसेल्फ इज हेल्ड हॉस्टेज बाय दीज स्कूल्स ओनली। जिस दिन हमारे मुल्क में स्कूल, द राइट टू एजुकेशन इतना आम हो जाएगा, इतना आम हो जाएगा कि कोई गली का बच्चा भी है जो स्कूल में जाके आपकी सिंगापुर की बुक्स पढ़ सकता है और उसको एजुकेशन आती है, उसको अंग्रेजी बोलनी आती है, उसको अपने आप को कंडक्ट करना आता है, उस दिन आई थिंक ये मोनोपोली भी खत्म हो जाएगी। बट व्हेन वुड दैट हैपन, उसके लिए द स्टेट हैज टू इंटरवीन एंड डू दैट what needs to be done, which they're not doing right now at the moment. But I think we'll derail from the topic a little bit. So let's come back to the abuse part of it. कि teachers जब ये ऐसे करते हैं तो हमारे बच्चों के ऊपर जो impacts आते हैं, किस तरह के impacts आपने देखे हैं, क्या-क्या आप उसके बारे में हमें बताएंगे? Oh, so many ways. Firstly, तो आपकी self esteem shatter हो जाती है, ठीक है? आप एक बच्चे की self esteem shatter कर रहे हो. Like again, like ये मैं 50 दफा बोल चुकी हूँ, but I have never understood how a 30-something, 40-something-year-old teacher has beef with a 10-year-old child. I don't get it. Has a what? Sorry. Beef with with a 10-year-old, like has a problem with, is fighting with, is seeing a 10-year-old child as their enemy. I don't understand it. How are you going to do? And so not only do you then shatter this child's confidence, you shatter their self-esteem, you make them second guess everything they do, you inculcate fear in their mind, you create this idea that everything I do must be done to perfection because I am afraid. And because I am afraid, I cannot afford to fail. And the pressure that puts on a child is just, it's too much. Like, I don't understand. Again, I don't understand कि realistically, जितना मैंने स्कूल में सीखा है ना, मैंने उसका ना मैंने मैथ्स कहीं अप्लाई किया अपनी जिंदगी में, बिकॉज मेरा मैथ्स का तो रैंट आएगा, आई हेट मैथ्स। ना मैंने मैथ्स अप्लाई किया कहीं जिंदगी में, ना मैंने वो ज्योमेट्री की ट्रांसलेट, जो भी लाइक ट्रिग्नोमेट्री, single thing, and yet I was so scared of getting those things wrong because I was like, nahi, teacher. And again, like, aapko kya mil raha hai ek bacche ko shame karke? You make shame a part of that child's life. You make that child fearful कि मैं कुछ भी करूँगा. I'm not operating out of a place of confidence. I'm not operating out of a place of I must do this for myself because I want to. I'm operating out of a place where if I don't do this, I will be ashamed. And shame is honestly उसकी जो long term impacts होते हैं, which again can man. I'm not a therapist. I'm not a psychologist, so I cannot sit here and pretend that I know all the long-term impacts, but the way it manifested for me was, again, like, I second-guessed everything. I was not confident. I look at myself. I developed certain body image issues as well, because again, you also can't not be pretty, right? You also have to be a pretty girl. Like when you're in school, God forbid you're a little overweight or you don't fit the right measurements and whatnot. Oh, fat shaming to बहुत ही ज़्यादा, वो तो एक different ही वो है. But so that consciousness that comes in, that loss of confidence, that idea, also there's rage. There's very real rage where I want to go back and I want to tell them that, look, I made it.
without your help. I made it. Like whatever making it is for me, but I did it. You said you thought I wouldn't. You thought my life would go a certain way, and it didn't. And I'm here. And yeah, so there's so much. There's again depressed anger. There's confidence issues. There's self-esteem issues. There's just आपकी जो खुद की self image है, the way you perceive yourself, so much of that gets impacted. And again, I would just want to ask these people, who gave you the right? Like how like just because क्योंकि हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि माँ बाप के बाद अगर किसी की आपने ताबेदारी करनी है, किसी की बात सुननी है, तो वो आपका उस्ताद है, वो आपका टीचर है. तो चूंकि आपके अंदर ये एक मेंटालिटी इनग्रेन्ड है, तो whatever the teacher say is you have, that's the Bible, you have to follow it, this is जो वो कह रहा है वो करें आप, चाहे वो गलत है चाहे सही है, आप उसको फॉलो करना है. लेकिन साथ ही साथ जब वही टीचर आपको अब्यूज करता है, जलील करता है, आपकी सेल्फ स्टीम तबाह बर्बाद कर देता है, तो आई थिंक ये जो आपने सारे इम्पैक्ट्स बताए, ना सिर्फ ये बल्कि एक डेली बेसिस पे जो एक स्ट्रगल है जिससे एक बच्चा गुजर रहा है, और फिर वही स्ट्रगल आगे चल के घर में भी ट्रांसलेट हो जाती है ना, क्योंकि फिर माँ बाप जब स्कोर कार्ड देखते हैं आपका, तो पहला सवाल तो आपसे पूछते हैं, बेटा तुम्हारा डी क्यों आया, तुम्हारे इतना लो क्यों आया, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, वहां से अलग छितर पड़ते हैं. तो इट्स लाइक इट्स अ विशियस साइकिल. You're ping ponging ना between two elements जहाँ से आपको छितर पड़े हैं, like या तो आपको स्कूल में पढ़ेंगे या तो घर पे पढ़ेंगे. घर पे पढ़ेंगे. तो ये इस तरह से फिर काफी एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है. क्योंकि जब मैं व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, तो ठीक है, उस वक्त आपको जो कुछ जिस चीज से भी आप गुजर रहे हैं, आप अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म खुद ही साथ बिल्ड करते जाते हैं. अच्छा भाई, मेरे पास ये टूल है, मैं ये इस्तेमाल करूंगा तो आई विल गेट आउट ऑफ इट. डिफरेंट, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म्स, डिफेंस मैकेनिज्म्स दैट अ चाइल्ड माइट यूज, राइट. और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आप इन चीजों को मैनिफेस्ट करते जाएंगे और सीखते जाएंगे. लेकिन जब आप एक अडल्ट बन जाते हैं, या तो ये चीजें सारी उम्र के लिए आपके अंदर इनग्रेन्ड रह जाती हैं, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अनफॉर्चुनेटली डर डर की जिंदगी गुजार लेते हैं, या फिर आप चुड़ैल भर के बाहर निकल आते हैं कि आप मुझे कोई कुछ क्या कर देंगे, अब तो मैं मुंह तोड़ दूंगा ना उसका. तो कहीं ना कहीं आई थिंक इसी स्पेक्ट्रम के इन्हीं दो हिस्सों के दरमियान आप अपना नेविगेट करते करते अपना रास्ता बनाते हैं. क्या ख्याल है आपका, है ना? क्या आप इससे एग्री करती हैं? Sorry? आप इससे एग्री करती हैं, लाइक इन्हीं दो स्पेक्ट्रम्स के इर्द गिर्द ही आप अपना रास्ता बुनते हैं, फिर नेविगेट करते हैं अपना, किस तरह से आपने करना. The word spectrum is right because वो एक spectrum होता है जिसके बीच में 50 चीजें चल रही होती हैं, 50 emotions होते हैं, 50 feelings, 50 ways of processing things होती हैं. But yeah, absolutely, I think that you do oscillate between these two extremes as well, and but वही बात है ना कि आप पूरी जिंदगी cope कर रहे होते हैं. And I would also encourage you, I'd like to take a minute here to encourage that if people who are suffering from all of this, like the long-lasting impacts of everything that happened, I do suggest that if you can, please do seek professional help. Therapy is great. Therapy is amazing. Everybody should get therapy. I know it's unaffordable sometimes. I know it's something that एक privilege सबका afford कर सकता है. I really do wish that wasn't the case, but I do think that if you can get therapy, and I would especially tell the teachers, you guys need to get therapy. Work through your issues. Leave your issues outside the classroom and then enter the classroom. Understand the responsibility you have. Understand the role you're playing. Leave your problems outside. Come to the classroom as somebody that the students can look up to, as somebody the students feel safe around. Don't cause more trauma. Don't create this vicious cycle of like unending, repetitive, traumatic experiences that just snowball forward. And Yeah, and the other thing is, we will just be wrapping up our discussion very soon because I think we've covered all the areas. मैं ये दो आखिरी बातें मैं आपसे जो पूछना चाह रही थी, वो ये थी. पहली बात तो ये कि हमने अभी तक जो स्कूल्स का जिक्र किया है, वो हमारे प्राइवेट एलीट स्कूल्स हैं, या सेमी प्राइवेट सेमी एलीट स्कूल्स हैं, या अभी तक हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स और मदरसों की तरफ तो आए भी नहीं है, जहाँ इतना बुरा हाल होता है, हर तरह का तशद्दुद बच्चे पे किया जाता है.
आप जब वो वीडियोस उठा के देखते हैं ट्विटर पे जो रिलीज होती हैं, जो कि बहुत वायरल हो जाती हैं, मदरसों में बच्चों को इतना बुरी तरह से मारा जाता है, तो वहां पे इवन दो चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल हैज बीन पास्ड, बट हैज देयर बीन एनी इम्प्लीमेंटेशन रिगार्डिंग दैट? क्या बच्चे महफूज हैं मदरसों में? क्या बच्चे महफूज हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में? इसके बारे में आई आप थिंक क्या कहते हैं? आई थिंक हमारे बच्चे महफूज हैं ही नहीं, पीरियड। कहीं भी हमारे बच्चे महफूज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट वी लिव इन, kids are not safe. There was this brilliant talk I was listening to, and it talked about how so much of our childhood is trauma, right? But in particular, I do think that there are so many ways in which kids experience that trauma, whether it's sexual assault, whether it's verbal assault, whether it's physical assault. And हम एज अ सोसाइटी पहले हमने इसके बारे में बात नहीं की, अब जब हमें पता है कि ये चीजें होती हैं तो हम उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे, राइट? मैं तो आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दीज वीडियोस दैट कम अप, बिकॉज every time something like this comes up, again, like there's this sort of traction that it gains, and then it just dies, right? Like, we've forgotten about so many ways in which this country has let down its children, whether it's Kusur, whether it's what happened in madrasa, whether it's what happens in our schools, and वही बात है, till we focus our attention to these issues, till we understand that there is a major upheaval that is required, till we see our kids as human beings and not some like dispensable thing that can be sent to these places, और उनको आप 3 चमाटे मारेंगे या कुछ जितना बदतर सलूक करने आप करेंगे और वो सीख कर आ जाएंगे, that is not how it works. लेकिन nobody wants to have that conversation, nobody wants to take that responsibility, nobody wants to understand that जो एक बच्चे की साइकी है वो किस तरह से चलती है, किस तरह से ये चीजें उसको इम्पैक्ट करती हैं. But answering your question, I feel awful. I feel when I see these videos, I feel extremely awful, but I feel angry. And I'll tell you why. It's the video that is horrible enough, but it is when people argue say, argue things like consent, like, oh, but if like there was this one video that went viral, and I know I'm going a little off topic, but there was this one video that went viral where the kid was 19 years old. Yeah. He had continuously been assaulted, and he made a video finally. उस वक्त सबने आर्ग्यू किया कि ये 19 साल का बच्चा है, इसकी कंसेंट थी. तो मतलब आपको कंसेंट समझ आती है ना? You as a society understand what consent is. You choose not to understand it when it comes to women. You choose not to understand it when women come forward with their allegations of assault and harassment. But you cherry pick and apply it to this situation in a heinous way. So what I get is, as a society, you understand. You choose to side with the wrong thing. And I want to ask, what has that child done to you, where you will argue that the child's consent is involved? Would you want that happening to your kid? Allah na kare aisa kuch hoga. Would you want that happen? Would you want that happening to you? I don't understand this. I will never understand this. There is no action. There is no talk of upheaval. There is no talk of accountability, which is what bothers me. No, and you're absolutely correct. And in that case, also, as we are talking about the subject, it was mentioned that the boy had done that so that he could record it and expose that guy, that man, that awful man. But the good thing is, Sajeer, that we are in times when at least we are talking about abuse now. At least we are bringing these topics to the fore. लोग बात करते हैं इसके बारे में, even though, or in social media is a very powerful platform. जब आप कोई चीज उस पर रिलीज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो आता है. ऐसे ही तो नहीं ग्रामर स्कूल का स्कैंडल आगे आया, एंड देन some action was taken against those people who were claimed to have allegedly assaulted those girls. तो ये कहीं ना कहीं एक पावरफुल मीडियम भी है, कहीं ना कहीं इसका कोई रिजल्ट भी आता है. But I think the conversations should keep on going, on around these topics. We need to keep bringing awareness to this to other people, ताकि वो इस बात को समझें कि जहाँ पे भी
human rights violation hoti hai, jahan pe child rights violation hoti hai, we need to speak up collectively, not just for that kid. That kid could be your kid also. Try to understand that and have that empathy, and just have just overall general empathy for everyone, every human being on this planet, not just like एक specific class के बंदे को आपने importance देनी है और किसी और को नहीं देनी है. आप हर बच्चे को मोहब्बत और respect के साथ आप treat करें, I think. तो चलें जी, we wrap up this discussion. ठीक है जी. Sajeer, any last minute thoughts that you'd like to add? Honestly, I would just want to thank you for having me. I think this is a brilliant conversation, and we definitely need to have more conversations like these. I also feel कि क्योंकि हम इतने टाइम की conversation हो रही है, like आपने जैसे बोला, social media is impactful. I would also love to see those conversations resulting in positive change as well. I think it's high time that we stop the system, that we call for change, and we see it through as well. Right. And I hope for the kind of world where our kids aren't put through what they're put through. And I honestly hope for the best. But I want to thank you for having me here. Thank you so much. Chale, my pleasure. Thank you so much for joining us today. And I would like to thank our audience for watching us today. Please give us your feedback. Give us your good feedback and bad feedback. Whatever you think, suggestions are always welcome. And please subscribe to our channel. And we look forward to seeing you soon again. Thank you so much. Okay, Sajeer, take care. Khuda Hafiz. Bye.